Okay, let's start. So we are talking about the packing efficiency. Next topic is packing efficiency. So first thing, what is packing efficiency? So do you remember in previous topic when we were studying about FCC, BCC? Okay, we wrote some of the packing efficiencies that somewhere the packing efficiency was 52.4%, somewhere 74%. That means the space occupied by the particles in unit cell. Unit cell में particles जितना space occupy कर रहे थे, that is called packing efficiency. So we can say about the packing efficiency that the fraction of total volume of unit cell occupied by occupied by particles, constituent particles is called its packing efficiency. Packing efficiency. Okay, इसे आप packing efficiency कह रहे हैं. But you know sometimes the packing efficiency can be obtained in percent. If packing efficiency is obtained in percent, in that case it is called percent packing efficiency. So let me write it. If it is obtained in percentage, then it is called percent packing efficiency. Percent packing efficiency. इसको हम परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे. So how can we calculate the percent packing efficiency of any unit cell or a crystal lattice? So there is a very simple formula for it. If we are calculating the percent packing efficiency, so we can calculate it as the volume occupied by the number of spheres. So we can say number of constituent particles. So total volume of particles, constituent particles here I am talking about, and total volume of unit cell multiplied by 100. So this is the formula by which we can calculate the percent packing efficiency. So this is the volume of the particle divided by total volume of unit cell multiplied by 100. And we know that all the particles of unit cell are in spherical shape. Okay, are in spherical shape. So if we want to calculate the total volume of particles, so we will do number of particles multiplied by volume of one particle. So we can write it number of particles multiplied by volume of one particle, then divided by total volume of unit cell and multiplied by 100. Now we can write a very simple formula for it. Number of particle of unit cell is represented by Z. Okay, Z is the symbol for number of particles in a unit cell. Then multiplied by volume of one particle. So what is the volume of one particle? That is 4.3 pi r cube. Okay, this is the volume of sphere. So volume of sphere can be used 4 by 3 pi r cube and divided by total volume of unit cell. And we know that all the unit cells are cuboidal shape. सबका जो shape होता है वो cuboidal shape होता है. So for cuboidal shape we can write side cube. Using the side cube we can find the volume of cuboid. Or if we consider the side to be a, अगर हम side को a consider करते हैं, multiplied by 100, or if we consider it as a, so we can write this formula like this: z into 4 by 3 मैंने नीचे ले लिया है, then pi r cube and a cube multiplied by 100. Now this is the formula by which we can calculate
by which we can easily calculate the percent packing efficiency. What means how much percent unit cells occupy in total volume. ठीक है, total volume का कितना परसेंट वो occupy करेंगे, we can easily calculate by this. ठीक है, so one by one we will see the percent packing efficiency in FCC, BCC, SCC. So we can calculate using this formula. Okay, let's have some example. कुछ एग्जांपल लेते हैं using this formula. How can we calculate the percent packing efficiency? इसको रफ कर रहा हूं मैं. Okay. First, we are going to find the percent packing efficiency in SCC. Percent packing efficiency in SCC. SCC means simple cubic unit cell. So, how much percent of total volume the particle occupy in SCC? Let's see. So, let me draw a diagram for it. So, let's draw a diagram of SCC. So this is a diagram of SCC, simple cubic unit cell. And in simple cubic unit cell, we know that the particles are present at the corner like this. Like this, particles are arranged like this. This is the simple cubic unit cell. Particles are arranged like this. Okay. So similarly, 4 particles will be on the 4 corner of upper side and 4 corner on lower side. Okay. So we consider that this is the radius of particle. It will be considered as r. This will also be considered as r, but the length of side is a. Okay. The length of the side is a. So we can here see that the side length of side A is equals to 2r. Okay, ये relation ध्यान रखना है आपको. The length of the side A is equals to 2r. वो 2r के equal है. Now let's take the formula. अब वो formula लेते हैं. हमारे पास जो formula था percent packing efficiency is equals to Z into 4 by 3 pi r cube divided by a cube. This is the formula which we use to calculate the percent packing efficiency. Okay. So as I said that Z is the number of particle. So can anybody tell me the number of particle in SCC? Total number of particle in SCC when it is present in unit cell. जब ये unit cell में present होता है तो SCC में number of particles कितने होते हैं बेटा? Anybody remember this? Can you tell me? One. There is only one particle because I told you that you can remind it as for single. So there are single particle because each particle contribute 1 by 8. So okay, so that's why we will use 1 here. यहाँ पर 1 का use करेंगे आप. Then 4/3 pi. The value of pi is 3.14, and then r cube, and then a cube. So in place of a, we can use 2r. In place of this a, we can use 2r. We know that a is equals to 2r. So यहाँ मैं a को हटा करके 2r लिख रहा हूँ. That is 2r whole cube. Okay. When we solve it, then we will have 4 into and 100 will be multiplied by 3.14. It will become 314 into r cube divided by 3 into and it will become 2 into 2 into 2 8 r cube. Now r cube can be cancelled out by r cube and the remaining will be this will be the remaining part. 4 will be cancelled by 8 by 2 times. Now we have 314 upon 6 and if we divide it, अगर हम इसको divide करते हैं then we will get approx 52.2%. So this will be the packing efficiency. This will be the packing efficiency of SCC. ये जो है 52.4%, sorry, 52.4%. This will be the packing efficiency for SCC. SCC के लिए packing efficiency हमारे पास में आ जाएगी. ठीक है? Let's move ahead. आगे चलें. Then we can discuss the packing efficiency of
एससीसी, एससीसी के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी को देख सकते हैं। ओके, यस, हाउ मच टाइम, 3 मिनट इज लेफ्ट, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर हियर, कई बार क्या इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सच टाइप ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड, कई बार ये रिलेशन पूछा जाता है, तो बेटा एक तो ये रिलेशन ध्यान रखिए आप बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो साइड की लेंथ है वो रेडियस से डबल होती है इन एफसीसी, ठीक है ना, because we will also study this relation in FCC and BCC as well. That is different. The relation between R and A is different in FCC and SCC. So it is asked in for 1 marks question. 1 marks question के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अलग से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। So it was the SCC. So in next class we will study about the percent packing efficiency of FCC and BCC and how can we calculate it. We will see in next class, ठीक है। So next class में हम उस चीज को देखेंगे। Okay, yes, we are taking packing efficiency in first FCC then BCC. So our next topic is packing efficiency. Packing efficiency in FCC. FCC means face centered cubic. So we are going to study the packing efficiency in face centered cubic unit cell. So let's see, देखते हैं। If we talk about the face centered cubic unit cell, the structure of this unit cell is like this. This is the structure of FCC, face centered cubic unit cell, and we know that in face centered cubic unit cell the particles are present in the center of face. So here let me draw a line, and at this line there is one particle at this corner, one particle in the center of the face, and one particle is here. So let me mark it A, and this is B, and this is C. Okay, तो A C को मैं यहाँ और ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 and 3. Now you can easily identify the particles between A and C. Okay, so there are 3 particles here, and we can see that there is one R, and R. That means AC equals to 4R. Okay, AC equals to 4R, क्योंकि जो R है यहाँ पर रेडियस है बेटा पार्टिकल्स की। Okay, so this is the radius of the particle. So if I calculate this distance, अगर मैं इस distance को calculate करता हूँ जिसको मैं AC कह रहा हूँ, तो AC will be equals to 4R. Okay, ये डायग्राम हमारे काम में आएगा। ये मैंने फेस सेंटर्ड बनाया। एक्चुअली फेस सेंटर्ड में क्या होता है, वी हैव अ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ फेस. सो हियर वी हैव अ सेंटर ऑफ फेस, देयर इज वन पार्टिकल इन द सेंटर, एंड आई हैव शोन 2 particles at the corner of the unit cell. Okay, and we have a formula to calculate the packing efficiency, that is percent packing efficiency. Packing efficiency, it is equal to Z multiplied by 4/3 pi r cube upon में a cube. This is the formula which we use to calculate the percent packing efficiency multiplied by 100 also. Okay, so now can anybody tell me what should be the value of Z for FCC? FCC के लिए Z की क्या वैल्यू होनी चाहिए? Can anybody tell me what should be its value? It should be no. एक्चुअली आप भूल गए बेटा, मैंने आपको बताया था। देखो आपके पास एक तो एससीसी होता है, एक बीसीसी होता है, एक एफसीसी एंड वन इज ईसीसी। तो मैंने कहा था यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट विल बी यूज्ड फर्दर। सो इन एफसीसी वी हैव वन पार्टिकल, ओवरऑल वन पार्टिकल व्हेन इट इज प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस. In BCC we have 2 particles, in FCC we have 4 particles, in ECC again we have 2 particles. So remember this. In FCC arrangement, face centered cubic, we have 4 particles. और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि F stand for 4, F से आप 4 याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो FCC में 4 particles होते हैं, तो वैल्यू फॉर Z should be 4. इसकी जो वैल्यू है वो 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ A है और R है, तो अगर मुझे परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो यहाँ A नहीं होना चाहिए, A शुड बी कैंसिल आउट। तो कैसे ना कैसे करके इसको कैंसिल आउट करना चाहिए। तो इस A को मैं R की टर्म्स में चेंज करूंगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लेट्स डू इट। एक बार देखते हैं हम, इसको रफ कर रहा हूँ।
देखिए, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक अ ट्राइंगल. हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं, ट्राइंगल ए सी एंड बी, जिसमें मैं ए और आर को रिलेट करूंगा. तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, in this triangle you can see this is hypotenuse, this is hypotenuse, this is base and one is perpendicular, and we know that AC square, as it is hypotenuse, AC square should be equal to AB square plus BC square. Okay, and we know that this AC is equals to 4R. We have already calculated it. AC equals to 4R and equals to AB, and AB is the side. So we have already discussed that the length of the side is A, है ना, साइड को हम A कंसीडर कर रहे हैं. So here the AB should A square and BC should also be A square. Okay, and it should be 4R whole square. AC equals to 4R whole square. So from this equation we can calculate the value of A. A की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. Then we can use this value to replace it. इसको रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ A का यूज करेंगे. So let's find the value of A. कैलकुलेट करते हैं इसको. It should be 4R. Okay, no, actually हाँ 2 root 2R, I think it should be there. Let's see. So 16R square equals to 2A square, and for A square it should be 16R square upon 2. Okay, and if I want to calculate the value of A, so square हटा के यहाँ रूट लगा देता हूँ. So it should be A equals to, होना चाहिए ये यहाँ पर, इसको बाहर लेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, इसको कैंसिल कर दो, है ना, 8. तो 8 का आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 R. सो इट इज द वैल्यू ऑफ A. ये हमारे पास A की वैल्यू है. सो वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं. लेट्स सी, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ Z इज 4 for FCC and 4 upon 3 into pi, pi is 3.14 into R cube into 100. Actually we can multiply 100 with pi. Okay, next time में कर लेंगे, next step में कर लेंगे. Okay, next is A cube. A cube को हम क्या लिख सकते हैं? A cube can be written as 2 under root 2 R whole cube. It can be written as, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको. ठीक है. Now next what we are going to do, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम. So while we are solving it one more step, then we will get percent packing efficiency equals to 4 into 4 16 into, and 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं. It should be 314 multiplied by, बाकी कुछ होता नहीं, R cube divided by 3 और 2 अंडर रूट 2R. इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें. तो अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2. तो इट शुड बी 16 अंडर रूट 2. इसको सॉल्व करेंगे तो 16 अंडर रूट 2 आएगा आपके पास. ठीक है. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 16 अंडर रूट 2 एंड R क्यूब. ठीक है. तो R क्यूब जो है वो R क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा. 16 विल बी कैंसिल आउट बाय 16. नाउ व्हाट वी हैव, अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ. वी हैव लॉट ऑफ स्पेस हियर. ठीक है, यहाँ हम स्पेस है तो वहां लिख रहा हूँ मैं. तो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी शुड बी, तो हमारे पास आनी चाहिए 314 अपॉन परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी शुड बी 314 अपॉन and 3 into under root 2. So one more step, 314 into 3 into 1.414. ठीक है. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, when you solve this sum, so you will get the value that is 74%. Okay, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 74% है. Okay, this is the percent packing efficiency. Okay, if it is asked that tell the only packing efficiency, so what should be the only packing efficiency, not percent packing efficiency? कोई बता सकते हैं बेटा कितनी होनी चाहिए? What should be its packing efficiency? Can anybody tell me the only packing efficiency of FCC? देखिए, it is very simple. आपको ध्यान रखना है, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यू मल्टीप्लाई द पैकिंग एफिशिएंसी विद 100
and if you are finding only packing efficiency, not percent packing efficiency, so packing efficiency इसमें 100 को डिवाइड कर दें, it should be 0.74. Okay, 0.74 is the packing efficiency and 74% is the percent packing efficiency. तो दोनों में डिफरेंस ध्यान होना चाहिए. Okay, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है आपको. So this is the percent packing efficiency in FCC. That means in FCC 74% space occupied by the particles and 26% space remain vacant. Okay, and one more very important thing which you have to remember is this relationship. This relation is frequently asked in board exam as well as in competition exam. This A is the side of unit cell and R is the radius of sphere. So this type of question is asked such as write the relation between side of unit cell and radius of sphere. So this is the relationship for FCC. ये FCC के लिए रिलेशन है, तो इसको भी आप अलग से ध्यान रखें. ठीक है, तो ये हो गया FCC की परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी. लेट्स डू परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC. अब BCC की बात करते हैं. Okay, let's see percent packing efficiency in BCC. Actually BCC is body centered cubic unit cell. Okay, in body centered cubic unit cell we can calculate the percent packing efficiency. So for this we will use the same formula हम use करेंगे. So first let's draw the diagram for it. इसके लिए diagram draw कर दें हम, किस तरह से show करेंगे. Let's see. So here I am showing the BCC. So I think you must remember that in BCC one of the particle is present in the center of unit cell. So here I have drawn one particle which is present in the center of the unit cell, and rest of the particles are present at the corner. They can be present at the corner. So like this, they can be present like this. इस तरह से corner पे भी हो सकते हैं. Okay, and let me mark it A. This is B. This is C, and this is D. Okay, these are the sides which I have marked A, B, C, D. Now what I am going to do, one particle I can draw here also, है ना, एक particle यहाँ भी draw कर सकते हैं. So what we are going to do right now, we know that we have a formula for it, percent packing efficiency. Percent packing efficiency equals to Z into 4/3 pi R cube divided by A cube into 100. This is the formula for percent packing efficiency. Okay, so for BCC, body centered cubic, right now we saw that the value for Z, number of particle in BCC equals to 2. अभी हमने बताया था इसके लिए जो number of particles होते हैं, they are 2. Okay, right. So there are 2 particles. So we can place 2 here. But the problem to finding out the percent packing efficiency is that we have A and R here. Okay, so we will have to change A into R. Side को आपको radius की terms में express करना है. So that is the problem. So that's why we have again drive a relation between A and R for BCC. BCC के लिए हमको एक relation drive करना पड़ेगा. Let's do it. So for that we can see in triangle ABC again. ठीक है, in ABC. This is A, B and C. I am talking about this triangle. So in this triangle we can see AC is a hypotenuse, and we can see AC is a hypotenuse. AB square equals to BC square. So Pythagoras theorem can be used here. तो यहाँ पर इसको use कर सकते हैं. So if we are talking about AC, so in case of AC we can see AC square equals to, but we know that AB is equals to A. A is the side. A is the side of AB, and again BC will equals to A also. ये भी A के equal होगा. So here I can write A square and A square again. That means AC square should be equals to 2A square. ठीक है, इसको अपन रखते हैं अभी. It will be used now. अभी ये काम में आएगा.
अगेन अब मैं दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ. विच ट्राइंगल? नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ विच इज डॉटेड हियर, विच इज शेडेड. ठीक है, आई एम कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल. So in this triangle you can see ACD. It is also a right angle triangle. So in triangle ACD, you can see AD is a hypotenuse. So you can write AD square equals to, and these are the sides. Now A, we can consider it A as well. Okay. So now we can say, so no, we cannot take it as A. This is AC. AC square will be equals to plus this is CD square. Okay, we can write it as, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि AD square equals to AC square plus CD square. But we have already calculated the value of AC square. AC square की वैल्यू हम देख चुके हैं. It is equals to 2A square. So we can place 2A square here. Okay, it is equals to AC square. And for CD square, we know that CD is equals to A. This is the side. So again, I can write A square here. So it AD square should be equals to 2A square. अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना. In AD, in length AD, we have 3 particles, and those 3 particles are connected with each other. So we can draw these 3 particles like as. इस तरह से शो कर सकते हैं 1, 2 and 3. These are the 3 particles, and these 3 particles are connected with each other like this. This is A and this is B. Okay, and this is R, 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 R. These are the radius of the particle. So we can say that this AD, जो AD है, AD should be equals to 4R. AD should be equals to 4R. So यहाँ पर मैं AD की जगह 4R लिख सकता हूँ. 4R whole square equals to 3A square. It can be written as. Now I can take the value of A here. यहाँ पर मैं A की वैल्यू को अब ले सकता हूँ as A square equals to, और इसको ओपन करते हैं तो it should be 16R square upon 3. Okay, if I remove this square, then it will be under root here. तो यहाँ पर under root हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो 16 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 16 should be 4R upon under root 3. So this is the value of A. So we have got the value of A here, that is 4R upon 3, root 3 is the value of A. तो हमने यहाँ से A की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है. Now I can use the value of A in this formula. अब मैं इस फॉर्मूला में इस A की वैल्यू को यूज में ले सकता हूँ. Let's see. For Z, we know that for BCC the value of Z is 2 multiplied by 4 upon 3, and for value of pi we know 3.14 into R cube into 100. Okay, and A की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो we know that the value of A is 4R upon root 3. It is 4R under root 3. Okay, and whole cube, because A has whole cube. A का whole cube है इसलिए हमने इसको लगा दिया. Now solve this equation. अब इसको solve करते हैं तो 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, then we will get 8 into 314 into R cube divided by 3 into, now see 4R whole cube. So 4R whole cube can be written as 4 into 4 into 4. 4 4 is 16, 64. It should be 64 R cube. And root 3 is the denominator of this term, which is already denominator. So root 3 can be calculated as root 3, root 3, root 3. It should be 3 root 3. So 3 root 3 को ऊपर में न्यूमरेटर में ले जाऊंगा फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा. It should be 3 under root 3. Okay, R cube will be cancelled out by R cube. Now we have 8 64 से 8 टाइम कैंसिल हो गया हमारे पास. Now we have 314 into 3 into the value of root 3 is 1.734 and divided by 3 into 8 again. Okay, so इसको जब आप सॉल्व करेंगे, when you simplify this equation, so I just write the thing approx. It should be about 68%, near about 68%. That is the packing efficiency of BCC. It means BCC, in BCC structure the particles acquire 68% volume of the total volume and 32% volume remain empty in BCC. Okay,
So these three type of packing efficiencies are in our syllabus, and we have to remember this derivation also ना, इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि it is asked in क्वेश्चन में कई बार पूछी जा चुकी है ये, for board point of view it is very important, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें आप. ओके, इज इट क्लियर? आगे चलें. तो अब हम बात कर रहे हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ unit cell. Now we are discussing the density of unit cell. While we are talking about the density of unit cell, we know that density is equals to, roughly we know that density equals to mass upon volume. Okay, it is mass upon volume. But while we are talking about the unit cell, density of unit cell, then we will say that it is mass upon volume divided by mass of unit cell divided by volume of unit cell. So it can be written as density of unit cell or crystal lattice, we can also say crystal lattice, equals to total mass of unit cell divided by volume of unit cell. Okay, now we know that the mass of unit cell is because of the particle present in them. यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं दे गिव द मास टू द यूनिट सेल को वही मास देते हैं. इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ यूनिट सेल, so it should be the number of particles multiplied by mass of one particle. So by this we can calculate the total mass of the unit cell, and the volume of unit cell, actually we know that unit cell is of cuboidal shape. So if we talk about the cuboidal shape, its volume can be obtained by side cube. So here I can write side cube. Side cube is the formula to calculate the volume of unit cell, that is cuboidal shape. So we already know that number of particles can be represented by Z. So here I can write Z to represent the number of particles. Then multiplied by mass of one particle. एक particle का जो mass होगा that can be represented by small n, and the side can be represented by A and Q. Okay, but sometimes we can express this mass in terms of molar mass and Avogadro number, and we know that the mass of particle is equal to the molar mass mv and divided by Avogadro number. So it can be represented as, density can be represented as Z multiplied by mv divided by Na and Aq. So here we have a formula to calculate the density. So using this formula we can calculate the density. Not only density, sometimes it is asked by giving the density and molar mass and the Avogadro number, it is asked to the students what type of unit cell is this, ये किस तरह की unit cell है. So if once you know the value of Z, अगर आप Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको Z पूछा गया है और आपको Z पता चल गया, we know that if the value of Z is 2, then it should be SCC, sorry 1, it is 1, it should be SCC, and if the value of Z is come out to be 2, then it should be BCC or FCC, and if the value come out to be 2, then it is BCC and ECC, and the value is 4, then it is FCC. So sometimes numericals are asked through this formula. इस formula से numericals पूछे जाते हैं. So let's see one numerical using this formula. इस formula को use करके एक numerical देखते हैं. तो उसमें आपको density भी पूछ सकते हैं, but once it was asked in the exam, but in that time it was asked that what type of unit cell is it, और आपको बताना था कि number of particle कितने हैं, उससे आप unit cell बता सकते हैं. चलिए देखते हैं एक numerical इससे related. Let's see. Okay, we have a numerical that is, मौसम बड़ा खराब है. Okay, no problem, but the study must go on. Yes,
The question is the density of chromium metal. Let me write it bigger so that you can see it clearly. The density of chromium metal. Chromium metal is 7.2 gram. 7.2 gram centimeter cube inverse. If the unit cell is cubic, and its age length is 289 picometer, then determine the nature of the unit cell. Or here the atomic mass of chromium is given. Atomic mass of chromium, Cr it is given. It is 52 gram mole inverse. Okay, it has been given. Now you have to tell the nature of unit cell. Nature of unit cell means what type of unit cell is it? It is BCC, ECC, FCC. What type of unit cell is it? You have to tell. आपको ये चीज बतानी है. So let's see how can we calculate it. It's very simple. We have already discussed the formula. So let me write the formula again. Then we will discuss. So we have the formula density equals to Z into MB divided by AQ multiplied by NA. Okay. So let's see how what are the values we have. First, density. We have given already density. Density is given 7.2. Okay, and 7.2 gram centimeter cube inverse. And next is atomic mass is given. That means molar mass or atomic mass is 52 gram mole inverse. It is given. And the length of is in picometer. Length is A. A is also given 289 picometer. Okay, and what we need more? NA is the Avogadro number, and we know the value of Avogadro number, that is NA equals to 6.22 into 10 raised to power 23. Okay, that is Avogadro number. So now we can easily calculate the value of Z. So let's put the value 7.2 equals to Z is, we have to calculate Z. MB is 52 divided by the value of A is 289, and it is, we have to take the cube of it, and Na is 6.022 into 10 raised to power 23. Okay, so we have put this value. अच्छा, one more thing is there. यहाँ एक और problem है कि यहाँ ये picometer में दिया हुआ है बेटा. So you have to change the picometer into centimeter because density is given in centimeter. So you will have to change it in centimeter. इसको change करना पड़ेगा, फिर ये value put करेंगे अपन. तो देखिए यहाँ पर 289 पिकोमीटर है. 289 पिकोमीटर में 289 into 10 raised to power minus 12. ठीक है. It is in meter. अभी तो फिलहाल ये मीटर में है. But if I want to change it into centimeter, अगर सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो मुझे पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें. That it will change into 289 into 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू हो जाएगी. So that means हमें क्या करना है यहाँ पर minus 10 का क्यूब और यूज में लेना है ना. या वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं 289 into 10 raised to power minus 10 ओके होल क्यूब. ये आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी है. अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और व्हेन यू सॉल्व इट, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो z इक्वल्स टू, लेट मी डू इट. तो यहाँ पर आना चाहिए आपके पास में, इट शुड बी 7.2 into
2, 8, 9 होल क्यूब मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर -10 है, इसको 10 रेज टू पावर -30 हो जाएगा, एंड देन 6.022 and into 10 raised to power 23 and divided by और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा इट शुड बी 52। ठीक है, इस पूरे को जब बेटा आप सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। व्हेन यू विल सॉल्व इट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इट शुड बी अप्रॉक्स 1.99 समथिंग, दैट मीन्स अप्रॉक्स 2 आना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, इट शुड बी अप्रॉक्स 2, ठीक है, लगभग 2 आएगी। तो इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ Z2, दैट मीन्स इट शुड बी वेदर BCC और ECC, क्योंकि हमें पता है कि BCC और ECC जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, दे हैव 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 2 आते हैं। ठीक है, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो इस तरह से हम आसानी से इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्लियर है बेटा आपको? चलिए, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम रहा है, वैसे तो मेरे ख्याल में शायद दिख रहा होगा, बट इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, so this is all about the density, and numerical can be asked in density in this question. Okay, so इसमें एक चीज और ध्यान रखना बेटा, we have 4 chapters, out of them the numericals are asked. First question is solid state. In solid state mostly numericals are asked through this topic density, है ना। density में से आपको numerical पूछे जाते हैं, बाकी numericals इसमें बहुत रेयर आते हैं। बाकी second solution is the chapter in which numericals are being asked, and electrochemistry, and the 4th chapter is chemical kinetics. So you have to prepare these 4 chapters for numerical purpose, because इनमें से ही numerical mostly पूछे जाते हैं। And one more thing which I want to remind you, there will be a regular weekly test. Okay, एक regular weekly test होगा बेटा आपका, जिसके लिए you have to prepare, and tomorrow there will be weekly test of chemistry. ठीक है, सभी सब्जेक्ट का होगा। In chemistry we will take the electrochemistry. तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक्स में आपको दूंगा, यू विल गेट द 5 क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और दे विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो प्रिपेयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर दैट, है ना। एंड एवरी वीक यू विल हैव अ टेस्ट। यस, बोलिए बेटा। टाइमिंग आई थिंक इट विल बी इन द मॉर्निंग 9 o'clock, समवेयर 9 o'clock आई थिंक, एंड द पेपर विल बी शूट टू यू, एंड it will be objective type, and you can submit the paper, you will get the result soon. Okay, उसी समय आपको रिजल्ट भी मिल जाए। वीकली टेस्ट on every Saturday there will be weekly test and 5 question will be asked in each subject, and it will be a combined paper of 30 questions. 30 question का एक combined paper होगा। हाँ, yes, there will be test tomorrow, कल होगा। 30 questions आएंगे उसमें, 5 question from each subject, ठीक है। और मॉर्निंग में आपको पेपर मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। यू हैव टू सबमिट आफ्टर आई थिंक 1 hour, इट विल बी 1 hour टाइम फॉर इट। ठीक है, तो प्रिपेयर करना एंड स्प्रेड द मैसेज टू योर फ्रेंड्स हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास अबाउट 9 o'clock, एंड यू विल गेट द मैसेज ऑफ इट। हाँ, यू विल गेट द लिंक। यस, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Time limit, it would be I think about 1 hour. In 1 hour you will easily complete it. ठीक है, okay, that's all.